In my arms is little Pinky. She is among the many dogs and puppies that have been saved by various NGOs across Delhi NCR. Pinky is about 20 days old and she was found by rescuers without her mom, one of the siblings dead. The Yamuna flooding in Delhi this year is way more intense than we have seen in any previous year. Every year rescuers go to the floodplains and rescue dogs, cats, buffaloes and cows. But this year casualties are high and rescue operations much more difficult. You will see in some of the videos that rescuers have shared with us on how difficult it has been to save and rescue scared little puppies. Pinky in my hands may not find a family to go into. Her mom is nowhere. We don't know if she survived or died like one of her siblings did. Right now, the only companions she has are some of the little kids who are staying here in Mayur Vihar as refugees currently till flooding clears up, and her brother who has been named Preeti by some of the kids here. Like Pinky, other dogs Bobby, Max, Yami roamed this alien territory hiding behind their rescuers for comfort. Animal shelters are packed so they can't be moved elsewhere. The rise in water level in Yamuna has inundated areas in Delhi like Mayur Vihar, ITO, Red Fort and parts of Noida. The rescuers are working round the clock in several of these regions, and among the rescued are dogs, cats, buffaloes, cows and even camels and horses. The rescue efforts show that the people of Delhi have not forgotten the speechless animals, as animal lovers and organizations have come together with the help of donations from across the city, have launched rescue operations to save animals. Operations are being conducted all across NCR in areas like Akshardham, Mayur Vihar, Yamuna Bank and Sector 135 Noida. It's not easy to rescue scared animals who already feel threatened and are alarmed by the situation. Volunteers like Shubhangi have to grab drowning or struggling dogs by their tails and put them in the boat. पानी में भाग जाते हैं और उसको कैच करना, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब. और सबसे दूसरा टफ जॉब होता है जब हम काफ को, बेबी काफ को या काऊ को या बफेलो को रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि आप किसी भी बोट पे बेबी काफ ला सकते हो बट आप काऊ बफेलो नहीं ला सकते, और वो इतना रोते हैं इस पानी में, उसके लिए कोई भी हमें हेल्प नहीं मिलती है. जैसे हमें खुद ही खींच के लाना पड़ता है. जैसे परसों इसने 5 करे थे रेस्क्यू. जो बंदा पानी में उतरा है ना, सारे कई सारे सांप हैं अंदर. Ojaswini Foundation has so far rescued close to 100 animals from areas near Mayur Vihar and Akshardham, but countless animals are still feared trapped. With NDRF teams constantly surveilling the river, Friendicos, a popular animal rights organization, was at the spot, haggling and pleading with boatmen to accompany them to rescue animals. Some have claimed boatmen were repeatedly charging NGOs and displaced people's money to join in rescue efforts. राजी जी, आपके बकरे कब बचाए उन्होंने? बच्चा तो हमारे उसी दिन रह गए, कल ले आए बच्चा हमारे. कल लेकर के आए? हाँ, कल निकल के आए. और कितना पैसा लगा? 500 रुपये लिए. Like Rajvi, other displaced people said they had been charged rupees 2,000 per buffalo by boatmen to rescue their cattle. Similar situation is unfolding in Sector 135 Noida, where more than 200 cows are reportedly stuck. A lot of gaushalas and animal shelters in the area are battling floods. Activists on ground said a lot of animals are feared dead. Delhi Congress President Anil Chaudhary also visited the river near Mayur Vihar and took stock of the situation. कितने जानवर फंसे होंगे अंदर अभी? बहुत बुरी स्थिति है. तमाम दावे खोखले हैं. मैं अंदर गया, ये चिल्ला खादर है, ये मयूर विहार फेज 1 के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने है. ये बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, लेकिन मैं बता दूं अंदर लोग भी हैं, मजबूरी में बैठे हैं. कुछ जानवर हैं. एक अंदर इन गरीबों की एक पैंट लगती है, मंडी लगती है, वहाँ आलम ये थोड़ा पानी वहाँ कम है क्योंकि हाइट पे है. वहाँ जानवर बंधे हुए हैं. पशुधन वहाँ पे है. पशुधन में गाय है, भैंस है, जानवरों में डॉगी है और बिल्लियां हैं. इस तरह के हैं. अब परेशानी है, लोग बाहर आ गए, कुछ अंदर बैठे हैं, अपने
पशु के लिए चिंतित हैं। और जो दावे किए जा रहे हैं 100% रेस्क्यू कर लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। जवान कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसलिए नहीं निकल रहे कि उनका 1-1 लाख रुपए का पशु, 50,000 का पशु जिनसे इनकी जीविका चलती थी, मोटर बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, इन्होंने खुद, आप दिखा सकें तो इस तरह के ये सोलर पैनल है, एक इसकी कीमत है, ये गरीब आदमियों के अपनी कीमत अपने पैसे से लेके आए। तो इनकी चिंता है कि इनका दोबारा घर कैसे बसेगा, कैसे चलेगा। सरकार से तो कोई मदद की उम्मीद अभी तक नहीं हुई है। For the print, this is Shubhangi Misra with Shiva Rajpoot reporting from Delhi.